हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आई होप एवरीथिंग इज गोइंग सो वेल। कमोडिटी ट्रेड्स, इक्विटी ट्रेड्स ओवरऑल तो अच्छे जाना चाहिए। इक्विटी में थोड़ा चेंजेस नोटिस हो रहा है मुझे, बट ओवरऑल आवर मार्केट, इंडियन स्टॉक मार्केट हैज डन वेरी वेल। साथ में कमोडिटीज में भी बढ़िया ट्रेंड मिल रहा है दिस ईयर। लास्ट में जो ट्रेंड के बारे में हम लोग बात किए थे वही कंटिन्यू होते जा रहा है। और इस वीडियो में हम लोग थोड़ा कमोडिटी मार्केट का अपडेट देखने वाले हैं वाया द फाउंटेन ऑफ गोल्ड सेटअप एंड अनदर of my setup, that is the cloud basic setup. So with this two, we are going to understand and decipher the commodity market in detail in terms of technical analysis. Fundamental, we are not going to cover in this video. तो चलिए मैं अपना लिस्ट में चलता हूं। तो उसमें कॉपर, पहले कॉपर का चार्ट देखेंगे विच इज बियरिश, दो कोई एक मेजर लेवल ब्रेक का इंतजार चल रहा है। दिस इज अ क्लियर बियरिश पिक्चर, बट दिस लेवल इज नॉट टेकन आउट 836। और जब तक डिसाइसिवली टेक आउट नहीं हो पा रहा, वी कांट से द सेल ब्रेकडाउन ट्रेड हैज हैपेंड। यहाँ पे जो कॉल आया था वहां से कॉपर फार्दर बियरिश है, इट वाज मोर ऑफ अ सेल रेजिस्टेंस कॉल। एंड फॉर सेल ब्रेकडाउन कॉल के लिए हम लोग इंतजार कर रहे हैं। काफी हाई है सेल का विन प्रोबेबिलिटी, वेयर एज कंसोलिडेशन का प्रोबेबिलिटी भी काफी ज्यादा है। तो बिटवीन बियरिश रेंज में है मार्केट। बियरिश रेंज मार्केट में मोस्ट प्रेफर्ड ट्रेड जो रहता है दैट इज टुवर्ड्स सेल रेजिस्टेंस। And let's look at the copper through this lens. This particular, it is a similar kind of picture, a mix. One trend is bullish, one is bearish. It is at a strong support level. A breakdown will ensure much bigger decline in copper. The levels will be much clearer here rather than वहां पे ये जो flat line 816. This will be an area where copper would like to move next. So quite a big fall, almost 20 रुपए का decline will be open if copper is able to break down. अगर break नहीं हुआ, it can go up, and main resistance का काम अभी करने वाला 870 and 855, and extremely on the, I don't think copper will be going above 890 anytime soon. मतलब हम लोग एक सिग्निफिकेंट बियरिश चेंज में आ गए जहां पे लॉन्ग टर्म ट्रेंड आप बियरिश बन चुका है। Bearish to neutral, it's no longer bullish, that's for a certain. And looking at the candle, the way it has moved lower, it doesn't look like immediately कोई turn around is coming towards bullish. Rather, it is a major turn from यहाँ पे जो market bullish हुआ था from 13th of May 2024. This has been a major turn towards long-term bearish. लेट्स लुक एट एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम में हम लोग बियरिश हैं और वही चल रहा है मार्केट में। इट हैज बीन बियरिश। लास्ट जो सेल सिग्नल, दो यहाँ पे लोअर क्वांटिटी वाज रिकमेंडेड टू स्टार्ट विद, देन वंस वी गेट अ ब्रेक it was we can go for bigger quantity. Now aluminum is also sustaining below this flat line. ये जो flat line है, ये flat line के नीचे sustain कर रहा है, so it is quite bearish. Next जो major support is quite lower, around 213 to 215. ये जो जोन है उस एरिया पे मेजर सपोर्ट है। एल्यूमिनियम में भी मेजर टर्न हुआ है in terms of trend. Let's look at aluminum. It's quite clear, beautiful break. But in terms of trend, one trend is bullish, one is bearish. So there will be at one point, there will be a bounce back. And after the bounce back, sell resistance, एक opportunity मिलने वाला है. Then we have zinc. Zinc is, यहाँ पे हमें sell signal मिल चुका है zinc में. First sell signal, not a very strong, super strong one. 29% के आसपास win probability, but we have a clear stop loss right now, 274 and 271 as min stop loss. तो जिंक को यहाँ पे क्या दिख रहा है? Let's look at this.
क्लियरली ये जो जोन था डाउ स्ट्रक्चर का ब्रेक हो गया. We saw a much bigger, sharper fall, bigger decline in zinc. Now the fall has come. The best trade would be to get a bounce back and then go for the short zinc opportunity. And if we are looking for short right now, we can go with this, but as the stop loss are quite wide, we'll have to do it small, and this is also a contra trade. Matlab, this is against the main trend, which is still bullish. And the main target zone जहां पे जिंक आएगा is 259. तो अभी अगर बेचेंगे, we don't have a strong big move area जिंक को जाने के लिए. It's about 6 rupees, 6 रुपए है, और whereas the minimum resistance इस जगह से 5 रुपए दिखा रहा है. तो उस हिसाब से currently the best policy will be to do small, quite small, as you will be able to enjoy the decline, because if this is strong, this will take a turn, and means ये अगर sell signal sell off strong है तो काफी गिरेगा. So there is no hurry, like just like copper. कॉपर में देखिए फर्स्ट बियरिश, आप स्टार्ट करेंगे थोड़ा थोड़ा करके, विल स्टार्ट ऑफ, you'll get corrections at points, you'll get again opportunity to short, you'll get a correction, again short. So gradually जैसे मार्केट आगे बढ़ेगा, जैसे मार्केट आगे बढ़ेगा तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं इन टर्म्स ऑफ एडिशन टू द पोजीशन. आप लोग अगर रेनबो के यूजर्स हैं, आप लोग एडिशन रूल ऑलरेडी मालूम है आप लोगों का, पिरामिडिंग रूल, different types of pyramiding rule already available. Now let's look at lead. Lead बहुत ही जोन में टाइम बिता रहा है, not related to somewhat other metals, एकदम ही टाइट रेंज है, एंड लग रहा है टाइम खत्म हो रहा है लेड के पास. इट इज नॉट गोइंग टू बी अ बुलिश. द बुल्स ट्राइड कम बैक सेवरल टाइम्स, 1 2 3 times. Now it looks like it is going to be vulnerable. Now once this level starts breaking down 189, we can again try some shorts with 190, 1 to 1.5 rupees stop loss, because if the break is good, but it's difficult at this point because this is also a strong flat zone. So it is still a very mixed picture. 71% chance ki consolidate hoga. Then we have crude oil. Crude oil, last time sell off jab aa raha tha, I told you, talked about these important supports जो वेरी लाइकली क्रूड ऑयल को सपोर्ट देने का चांस है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस किए थे. एंड एग्जैक्टली वही एरिया से, इफ यू ब्रिंग द कैंडल लिटिल बिट विजुअलाइज, एग्जैक्टली वही एरिया से बाउंस बैक हुआ है. दैट इज द ब्यूटी ऑफ द रेनबो सेटअप. वी कैन नो अबाउट की लेवल्स. On the upside, now we also have resistance 81.85. कैंडल का साइज देखिए बड़ा हो चुका है. That means we are going to see both-sided volatility, a mixed market. In the mixed market, we don't do anything. आपको दो ही अलर्ट काम करेगा यहाँ पे. Price action bullish, मतलब full green candle. If I want to buy, that is the minimum. या तो price action bearish. इनमें से कोई आएगा तब जाके हम लोग का ट्रेड बनेगा, अदरवाइज ट्रेड नहीं बनेगा. एंड द ब्रेकआउट ट्रेड के लिए 83.33 कोई मेजर न्यूज आ सकता है तो इसका भी अलर्ट डाल देते हैं. क्रॉसिंग ऑफ खत्म. नीचे का जरूरत नहीं, देयर इज स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, प्राइस एक्शन पहले ही बियरिश हो जाएगा. सो ऐसे अलर्ट प्लेस करके हम लोग आगे बढ़ेंगे. क्रूड ऑयल इज एक बहुत ही मिक्स सिचुएशन में. आई विल प्रेफर नथिंग, कुछ भी प्रेफरेबल नहीं है एट दिस पॉइंट. नेचुरल गैस,
Natural gas significantly bearish, steadily moving lower, and there is nothing changing the direction so far, except there is a consolidation होने का चांस है. वो तो कभी भी रहता ही है मार्केट में. जो भी मार्केट के पार्टिसिपेंट है वो लोग जानते हैं कि कंसोलिडेशन होने का प्रोबेबिलिटी ऑलवेज रहता है. तो उसमें क्लियरली दिख रहा है कि नेचुरल गैस इज बियरिश, तो मैं नेचुरल गैस में सेल ऑफ ही मेंटेन करूंगा. देयर इज नो रीजन मेजर टू एग्जिट. एक एग्जिट के बाद फिर से री एंट्री का मौका मिला था, and since then natural gas has moved further bearish. So currently to find important support, we will have to check bigger time frames. And we will have to look at, more importantly, at international natural gas, not the Indian natural gas. And in international natural gas, if you can see, the price has been for a very long time, after staying above, the US production improved significantly because of fracking. Since then, natural gas price has steadily been falling, and this will actually increase the gas acceptance. We are in a transition phase in terms of energy. Part of it is moving towards battery, electricity, and in this electricity generation, more than coal or oil, this natural gas is going to play a major important role, and already playing. So first it is likely to go down, but as the demand goes up, more and more volatility, trading opportunities will keep on coming. मैं initially bullish था, at this point जहां पे buying हो रहा था, because there was reason to be bullish looking at the European demand and levels. But as US natural gas production continued ऊपर जाता रहा, and Europe में fresh supply arrived from Qatar, and it was negative news where the supplies are building up in the US, and we are following the US natural gas for MCX trading. That was a clear sell-off, and that's why more than when we are trading, more than important analysis, you believe your eyes, real-time risk management. Though I'm expecting something, say Europe may they demand, etc., and expecting natural gas. Say if this level it broke, it could have gone far bigger. But when I see the market, that is the beauty of the technical analysis, the beautiful timing tool. As the changes are happening, I'm clearly able to view and go with the market. So natural gas is clearly moving lower. The current support level in terms of this is $2. This is one psychological level. इसके अलावा 1.75, 1.8 area you can expect to act as support. These are projections based on PNF. ये जो levels की बात मैं कर रहा हूं, based on PNF, these are projections. Projected supports. Now we'll have taken a look at lead, crude oil, natural gas. Let's look at finally gold and silver. And gold and silver के मामले में मैं prefer करता हूं देखना international chart. इंडिया भी देखते हैं, but international जरूर देखते हैं. That's for sure. इंडिया भी देखेंगे, और हम लोग बोले थे कि important level, और वहीं से गोल्ड का beautiful rise. I remain bullish on gold. There is no reason to exit. एक रेड कैप चाहिए मिनिमम एग्जिट के लिए. So I'm not exiting gold, and this is an all-time high, beautiful. I'm happy to add gold. There is no reason for it. It's a beautiful breakout in the weekly chart. It's a beautiful breakout in the daily chart. So this is awesome going.
I'm currently using the fountain of gold. If I wanted, I could have used the commodity as well. जो commodity select करते it I'll be able to show, but fountain of gold can be used across asset class is the mother setup. So gold is the one rising. जो लोग gold खरीद नहीं पाए, silver खरीदे थे, सोचे थे silver will do well. Silver did not do well. Silver is not in the right mood. यहाँ पे right mood पे नहीं है silver. Whereas the gold भी is right mood पे है. Silver में एक sell signal. देखिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ये सेल ऑफ हो जाएगा और बड़ा सेल आएगा, बट दिस कैन रिमेन इन अ रेंज नाउ, say $30 and this level, whereas gold keeps on continue to go up. I'll definitely look to silver buy, but if I get it as close to this level, $29.3, 20 to around this level or close to say 29.8, मतलब $30 और थोड़ा गिरने दीजिए, तो $30 के आसपास I'll always prefer to go for silver as a strong base. But currently with silver as a short signal, silver is not good. It's been gold. Gold has been beautiful and it has been a beautiful breakout. And when I see a beautiful breakout, it sounds like money coming in. So I'm quite bullish on gold, but not so bullish on silver. Silver, I am bullish, I'm not bearish, but silver, I'm more gradual bullish. Currently, I'm not so aggressive to jump on silver. I'll remain in gold and I'll remain aggressive in gold. And my stop loss currently, currently जो लोग यहाँ पे trade करेंगे, position लेंगे, especially this is you'll have to volatility होने वाला है. तो आप डर मतलब डर के आगे जीत है, डरने का कुछ है नहीं. यहाँ पे देखिए कितना ब्यूटीफुल ब्रेकआउट हो रहा है. शांति से दिमाग ठंडा रख के काम कीजिए एंड गोल्ड में बढ़िया पैसा आने का आई एम एक्सपेक्टिंग. दिस इज अ वेरी गुड राइज इन गोल्ड. बीच बीच में करेक्शन आए, देयर इज सडन फॉल, देयर इज नो नथिंग टू पैनिक राइट नाउ. बी काम, बी फोकस्ड. ये रेनबो का चार्ट अगर इस्तेमाल कर रहे हैं, इसमें राइट अलर्ट लगाइए, लाइक प्राइस एक्शन न्यूट्रल. आप चाहे तो कुछ वहां से निकल जाइए, बट लार्जली मैं बुलिश हूं और भी एडिशन का ही सोचूंगा इस पॉइंट पे. नाउ लेट्स लुक एट, जस्ट अ मोमेंट, इंडिया का एक बार गोल्ड, इंडिया का एक बार गोल्ड देख लेते हैं. सिंस यूएस का यूएस का गोल्ड तो देख ही चुके हैं, इंडिया का गोल्ड में भी ब्यूटीफुल कमबैक. मेन जो रेजिस्टेंस है ये देखिए, इसके दिस इज टॉपिक हियर 74,700. दिस हैपेंस ड्यू टू कॉन्ट्रैक्ट, कंटीन्यूअस कॉन्ट्रैक्ट, बट इट लुक्स बुलिश, वेरी वेरी क्वाइट बुलिश. और वीकली चार्ट को भी एक बार इस्तेमाल करके देखेंगे. अ ब्यूटीफुल क्रॉसओवर इज हैपनिंग. चार्ट को और एक बार फाउंटेन ऑफ गोल्ड मदर सेटअप कर दे रहे हैं. It's a crossover and a beautiful breakout happening. So gold definitely remains bullish among the commodities, whereas other metals are not looking so hot. And natural gas, I definitely remain bearish, whereas crude oil is in the mixed market situation. Base metal may new opportunity in zinc for a sell signal, but they are low probability. ज्यादा पैसा ना आने का, देयर इज स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बेस, तो वो सोच के काम करना होगा. बिग ब्रेक कैन हैपन इन बोथ कॉपर. एल्यूमिनियम इज ऑलरेडी इन अ ब्यूटीफुल ब्रेक, इट कैन गो फॉर बिगर राइट. सो डिफरेंट सेलिंग, सेल रेजिस्टेंस, जिंक में भी सेल रेजिस्टेंस, लुकिंग एट द मैक्सिमम स्टॉप. दीज आर शुड बी योर स्ट्रेटेजी. इसके साथ साथ हम लोग देखेंगे ग्लोबल पिक्चर को. GSCI, global commodities, how global commodities are doing. Not so good. It's a red candle. Currently not so good at the moment. If we look at USCI,
which is ETF focusing on fundamentally bullish commodities on some fundamental factors, not so hot at the moment. Let's look at agriculture as a whole. Agriculture as a whole is also not doing so good. So only few are shining. Among them, gold. Gold is definitely shining. So positioning in commodity is becoming quite clear. On the major, confidently, we are getting buy side gold. Sell side, we are getting natural gas. Aluminium, zinc, aluminium big break already. Copper can go for big break. Zinc is a major turnaround with low return trade. Better trade would be to zinc to look for sell resistance opportunity. So that's all, friends. This is my commodity discussion. I hope if this video was helpful to you. Agar aisa hua, don't forget to like it. And all the best from my side.